गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, जहां पे अब हम नेक्स्ट 1 आवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जामिनेशन, नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जामिनेशन। सो कैसा गया आज सबका पेपर? जिन लोगों ने पेपर दिया था, हाउ वाज इट? कैन यू सी माय स्लाइड? ओके, यस, वी हैव अ लॉट ऑफ, मेरे पास इस वीकेंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए टेलीग्राम पे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मेरा गेट क्लियर हो गया है, मेरा इकोनॉमिक्स गेट क्लियर हुआ है। somebody with ऑल इंडिया रैंक 29, 19, 37, 157, 97, 36, अच्छे खासे सबके आए हैं। गेट क्लियर किया है तो मुबारक हो सभी को। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस पीपल हु हैव क्वालिफाइड। नाउ दे आर गेट क्वालिफाइड। जेआरएफ नेट क्वालिफाइड थे, अब वो नेट क्वालिफाइड हो गए हैं और जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए हैं, गेट क्वालिफाइड हो गए हैं। ओ माय गॉड, क्या क्या हो गया है। थैंक यू मनीषा फॉर फॉलोइंग मी। You have it's your, what you have deserved is basically what you got is what you have deserved, what you were deserving, right? So बहुत बहुत मुबारक हो। Very good evening Manisha and everyone. So people are becoming set qualified, net qualified, gate qualified, JRF qualified. क्या बात है। It's because of you guys that I am here, राइट। क्लास तो शुरू करने दो रविंदर जी, पहले ही पीडीएफ डाल दूं तो फिर उसके बाद पीडीएफ डाल देता हूं, फिर आप क्लास नहीं करता, ये चाहिए? रविंदर जी बताइए। ओके, थोड़ा जूम करवा दीजिए। ओके, जूम करना, लेट मी जस्ट सी, बिकॉज ये नया चीज है। ओके, कैसा है अभी? अभी ठीक है, राइट? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एंड लेट्स डिस्कस द पेपर। नॉर्थ ईस्ट का पेपर जितना मैंने देखा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन जितना भी देखा है बहुत अच्छा पेपर है, उम्दा क्वालिटी है। जिन लोगों ने इसको पेपर को दिया है, वेरी फैंटास्टिक, आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन बोस्ट अबाउट, राइट? सो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो यहाँ क्या है? ओके, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिम स्टेट मेंबर कंट्री। बिम स्टेट का मतलब क्या हुआ? बिम स्टेट इज बेसिकली बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सो यहां से सिंगापुर इज द वन जो कि ऑड मैन आउट है। मेरा यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसके साथ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, नाउ इट्स फाइन। यस, सो इट इज सिंगापुर, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज बिम स्टेट का मतलब है बांग्लादेश। सबको दिख रहा है ना? मुझे प्लीज आप चैट में बता दीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो। मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड ईटी का मतलब है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट? सो ये है 1995 1997 में हुआ था ये, एंड दिस इज व्हाट द आंसर, सिंगापुर शुड बी आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज फ्रॉम आवर नोट्स। नोट्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा केस था ये। सो यहां पे क्या था? जीडीपी डिफ्लेटर। इसका इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में भी मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब में, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में ही वो पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा रखा है मैंने इसमें। सो इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और जब भी ऐसी चीज है उसका परसेंटेज ग्रोथ निकालने के लिए ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी माइनस परसेंटेज चेंज इन द रियल जीडीपी। सो यहां पे देखिए इन्फ्लेशन दे रखा है, इन्फ्लेशन इज इन परसेंटेज, यानी कि ये है परसेंटेज चेंज इन द जीडीपी डिफ्लेटर। सो दिस इज गिवन एज 5 और नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 13 माइनस परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, सो ये हो जाएगा 8%। सो राइट आंसर शुड बी 8%। आई बिलीव ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। नहीं दिख रहा बिकॉज मुझे ये नया दिस इज द टाइम व्हेन आई एम वर्किंग ऑन द पीडीएफ। सो अगर ऑल फाइन देन इट इज, लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक। सो इट इज बेसिकली एनडीजी, नहीं एक सेकेंड रुकिए, नेट net domestic product at MP is equal to gross domestic product at MP minus depreciation. So depreciation should be the answer here. Third, the concept of थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स आया था इकोनॉमिक सर्वे 2019-20,
जहां पे पहली बार ये बोला गया था व्हाट इज थालीनॉमिक्स बेसिकली इन इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश इट मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्लेट, राइट, प्राइस ऑफ अ प्लेट। सो यहाँ पे ये देखा गया था कि जितना मुझे याद है शायद अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। सो 2019-20 में दिस वाज फाउंड दैट वेजिटेरियंस की वेजिटेरियन थाली जो है दैट हैज इंप्रूव्ड और उसकी अफोर्डेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 29%, वेयर एज नॉन वेजिटेरियन की जो थाली है दैट इज इंक्रीज टू बाय 18%, राइट। सो that is what the point. So I will go with the B option. Devaluation makes balance of payment worse in the short run then long run. तो ये पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, this is a J curve effect. Okay, sixth question, heteroscedasticity means all the variables, all the variance of the error is not constant, that the variance constant नहीं है, right? Otherwise अगर variance constant होगा तो it will be like this, but it is not constant, तभी तो वो heteroscedasticity है। errors, variance of the error is not constant. Okay, through two time series are individually, question net का question है, the question same question was there in net I think July 2018 या July 2019 में question एक आया था ये। so जब दो टाइम सीरीज आर नॉन स्टेशनरी उनको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन कर लें दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द को इंटीग्रेशन अप्रोच एंड बेसिकली बेस्ड ऑन दैट हम लोग नॉन स्टेशनरी को स्टेशनरी बना सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली which of the following are the debt obligation of the government of India? Government of India का debt obligation जो है that can be divided into two parts, one is internal, one is external. internal के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, for example जितना मुझे याद है internal में we have the market loans, right, then we have market loans, इसमें आता है greater than 12 months, more than 12 months, then you have bonds, then you have स्मॉल सेविंग्स में आपका आता है 6 ईयर 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं इसके अंदर। देन यू हैव टी बिल्स, राइट, टी बिल्स आते हैं जो कि T91 या 182 या 364 डेज वाले आएंगे। ई पार्ट इसमें आता है, आई एम बेसिकली रिकॉलिंग, सो प्रोविडेंट फंड आता है, प्रोविडेंट फंड अमाउंट आता है। इसके अंदर ए पार्ट आएगा दैट इज स्मॉल स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड बी पार्ट आएगा जिसमें यू हैव द बेसिकली पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें रिजर्व फंड भी आता है दैट इज एफ पार्ट, दैट इज रिजर्व फंड, राइट। ये सारा कुछ इसके अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सो स्टेट प्रोविडेंट फंड जैसा कि मैंने बताया, यस, स्मॉल सेविंग आता है, रिजर्व फंड आता है, रिजर्व मनी नहीं आएगा। सो इट इज 1 2 4 दैट इज करेक्ट, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट। ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, राइट। Kuldeep, I am working on this. Please, if you want, I am solving the paper. I cannot answer that question now. कौन सा एग्जाम है वनिता जी? आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है नॉट ई स्लेट एग्जामिनेशन 19 मार्च को हुआ है, तो यू कैन सी दैट पार्ट। प्लीज my question in the chat, please let me solve the question, then I will take your general doubt. All fine? Okay, let's move to the next question. So ये वाला हो गया है, इसका सी आंसर है फ्री राइडिंग कैन अकर इफ द गुड इज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में क्या होता है, वी हैव द नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, सो इट शुड बी सी ऑप्शन। Then you have identify the type of concept, again from all these questions are notes, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से आ रहा है। Identify the type of the isoquant, assume zero substitutability, यानी कि इसका मतलब है this kind of thing जो कि कॉम्प्लीमेंट्री केस है। So it is the input output isoquant. Games in which the description of the game is done in the form of decision tree. So दो टाइप के गेम्स होंगे यहाँ पे जब हम इस तरह करते हैं। एक जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गेम। नॉर्मल फॉर्म ऑफ गेम मैट्रिक्स में जाता है, और एक्सटेंसिव फॉर्म जो आता है, एक्सटेंसिव फॉर्म दैट इज बेसिकली इन द डिसीजन ट्री, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। साइमल्टेनियस गेम के लिए, सीक्वेंशियल गेम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल लगता है साइमल्टेनियस में और एक्सटेंसिव लगता है सीक्वेंशियल में। सो इट इज द आंसर शुड बी डी। सो अभी तक जितने मैंने बताए, फर्स्ट इज सी, आई डोंट नो विच विच code is this, but आप एक बार मैच कर लीजिए because almost all the codes will be having the jumbled question. So ये है फर्स्ट सिंगापुर,
that is C. Then second is 8, third is C, fourth is B, 5 is D, sixth is B, seventh is C, eighth is C, then ninth is C, 10th is D, 11th is D. Taking into consideration utility of all person in a society is basically utilitarian social welfare function that was given by Bergson Samuelson, राइट उसके बाद आता है एस्टिमेटिक इंफॉर्मेशन, बहुत बार इसके ऊपर बात किया है मैंने. ऑल पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन पोजेस लेस देन फुल इंफॉर्मेशन, वन पार्टी, दिस इज व्हाट द राइट आंसर. एक पार्टी के पास ज्यादा और एक पार्टी के पास कम होता है. अगर इफ ऑल द पार्टीज इन द ट्रांजैक्शन लेस देन फुल इंफॉर्मेशन, दैट बेसिकली मींस इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन. एंड यहाँ पे इट इज बेसिकली दोनों में से किसी एक के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा. मोस्ट प्रोबेबली सेलर के पास ज्यादा होता है या फिर बायर के पास भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. सो दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट नॉलेज, इट्स अ केस ऑफ परफेक्ट इनपरफेक्ट नॉलेज, ये तो है ही नहीं. सो इट इज द ऑप्शन बी दैट शुड बी करेक्ट. Which of the following is true for an optimum solution of the linear programming? So इसका आंसर will be A, that is the number of non-zero valued slack variable is equal to the number of constant. जितने constant हैं आपके पास एक होगा यहाँ पे, that is the objective function, राइट, या जो आपका बेसिकली द मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स. सो अगर जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें अगर आपके पास द नॉन जीरो वैल्यूड जो है स्लैक वेरिएबल दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, देन यू हैव द ट्रू ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस शुड बी ए आंसर. 15th, given dy is equal plus 2x is equal to 0, this is basically the question from differential equation, जहां पे आपको करेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन सॉल्व बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट फाइनली आई थिंक व्हाट इज द आंसर शुड बी दिस वन. बी शुड बी द करेक्ट आंसर. यहां पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकलेगा तो ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा. इसका पीडीएक्स लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे. आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, राइट. Without solving this, I'm saying which one of the following assumption are not valid for the Lewis model? Economics is the dualist. ये ठीक है. This is correct. This is incorrect. The subsistence sector make use of the, no, it is the modern sector that use the reproductive capital. Subsistence sector ये assumption में ही है कि subsistence sector does not use the reproductive capital, राइट, जिसकी वजह से उनके वहां प्रॉफिट नहीं होता. दैट इज व्हाई दे आर नॉट बीइंग पेड एज पर द मार्जिनल वेज, दे आर पेड एज पर द एवरेज वेज. सो दिस इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट वैलिड बोला है तो सी इज द नॉट वैलिड ऑप्शन. 17th, कंसिडर, ओके, करेक्ट आंसर. Harrod introduced three growth, so it is basically GA, GW and GN. So it should be A. I think बाकी वाला एक बार देख लेते हैं, ये सब गलत है. So A, 17 का A आंसर. Which of the following is the fifth stage? Fifth stage basically high mass consumption, right? Then you have 19th, income distribution aspects, Solper and Samuelson, Solper-Samuelson theorem. Okay, biggest holder of the government of India dated security in India is basically LIC, जिसके पास मेरे ख्याल से 18% है पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटेड सिक्योरिटी का स्टॉक्स, राइट. तो इट इज द बिगेस्ट वन. Then you have which of the following is not a characteristic of the stagflation? Stagflation में we have high inflation, low growth, high unemployment. High unemployment is incorrect, so not बोला है तो it is should be C. Hedging refers to the acceptance of a foreign exchange risk. No, it is a covering of the foreign exchange risk. No, it is not. 22nd should be B. Which of the following, this is again from the notes, alcoholic beverages for the human consumption is not included yet. अभी तक it is not included. इस पे पूरा का पूरा पैसा लगता है तो it is basically the not covered under GST. Systematic investment mutual fund, that is SIP in mutual fund, gives the advantage of the price costing average. कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन overall if you invest the money then it is going to give you the average cost pricing हो जाता है इसके अंदर. So वही चीज है यहाँ पे price cost averaging या फिर average cost pricing. So it should be C. Prohibited tariff, basically this is goes like this, then this, then this. This is the point that is TP and this is the point that is optimum tariff. So optimum tariff and prohibited tariff, it is the case where we have zero imports. Again from the notes, national welfare
के साथ मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो जीरो इनपुट्स प्रोहिबिटेड टैरिफ के बाद आगे कितना भी टैरिफ आप बना लीजिए, उससे नेशनल वेलफेयर पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इट विल बी कांस्टेंट। तो दिस कर्व इज फॉर द वेलफेयर कर्व। Secondly, prohibited tariff, we have the zero inputs. So this is what the entire situation. Which of the following is not correct about the accelerator theory of investment? This question has some options incorrect. Some options are incorrect. Option is incorrect here. जितना मैंने इसको पहली बार में देखा, सो बेसिकली दिस इज फाइन, देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल गुड सेक्टर। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा, परमानेंट डिमांड होगा, डिराइव डिमांड बढ़ेगा, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, डिराइव डिमांड फ्रॉम मशीन्स विल इंक्रीज, मशीन्स की इंक्रीमेंट होगा, सो मोर इन्वेस्टमेंट, मोर मशीन्स, मोर एम्प्लॉयमेंट, दैट्स हाउ द थिंग इज, मोर आउटपुट तब बढ़ेगा। तो ये सही है। इंटरेस्ट रेट इज अनचेंज, दैट इज ऑल्सो फाइन, इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी इंक्रीज, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो द बिजनेसमैन विल नॉट टेक लोन, बिकॉज जैसे ही डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गोज अप, इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो गो अप फ्रॉम द सप्लाई साइड। दैट इज वाई व्हाट विल हैपन, द स्केर्सिटी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, तो इट कैन नॉट हैपन। सो दिस इज द बेसिकली assumption. इंक्रीज इन द कंज्यूमर डिमांड इज परमानेंट, दैट इज राइट ऑल्सो, बिकॉज ये वाला केस मैंने बार बार बताया है, विद द हेल्प ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। जब मैं हमेशा एग्जांपल यूज करता हूं, मैंने पहली बार N95 का मास्क खरीदा था कम से कम 550 रुपए का, उसके बाद आपको कहीं पे भी सस्ते में सस्ते 20-25 रुपए में ही मिल जाएगा। So that was the given statement. So this is incorrect here. However, there is nothing called as exemption good. We have consumer good industry. सो बेसिकली एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हैं, कंज्यूमर डिमांड गुड में, कंज्यूमर गुड्स में देयर इज नो एक्सेस डिमांड, राइट, तभी वो डिमांड बढ़ रही है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही कंज्यूमर गुड में अगर एक्सेस डिमांड है, सो जो पाइल्ड अप स्टॉक है उनको बेचना शुरू कर देंगे। सो दिस क्वेश्चन इज, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एक्चुअली एब्सर्ड, इसका लेना देना नहीं है कुछ, nothing to take, nothing to be linked with the accelerator theorem, because accelerator theory of investment has to do with the consumer good as well as the capital good. So ये तीन ऑप्शन सही हैं, जो बचा कुचा है वही इसका आंसर गलत हो गया है। So this is the A that should be the right here. So जिनको बाद में दिखेगा, so let me just put this one answer, this part is incorrect, right? Okay, 27th question. Which of the following is not correct in the derivation of the aggregate demand curve? Aggregate demand curve में you have ISLM से ही aggregate demand बनता है, right? So IS curve shift होता है, price level change होगा, because aggregate demand is basically what P as and Q के बीच में function, right? P as a function of Q. इनवर्स मैंने निकाला यहां पे, अगर आप सही से देखेंगे तो इट इज Q एज अ फंक्शन ऑफ P। ओके, LM रिप्रेजेंट द रियल मनी सप्लाई, ये सही है। मनी सप्लाई इज अनचेंज, ये नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे ही मनी सप्लाई चेंज होगा प्राइसेस लेवल चेंज होंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट। 27A, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट, अगेन द, देखिए नाउ अगेन दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन, डिबेटेबल क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज परचेसिंग पावर पैरिटी में ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारे के सारे दे आर the criticisms of all of them are criticism of PPP theory. इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, that depends upon the situation. For example, this is very generic, right? यहां पे मैं अपना कॉमन सेंस लगाऊंगा, ये बहुत जेनरिक है। It is very difficult to compare accurately the purchasing power in different countries, because different countries में inflation is there, different countries have different bargaining power in the international market, in the world market. For example, dollar has a higher bargaining power, influential power also. So this is fine, ये generic है. It does not allow for the possibility of the devaluation. This is also right. इसमें सारे options right है, याद रखना, इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। आपको वो ढूंढना है जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। Now, मेरे हिसाब से not often different countries go for devaluation. So ये ऑप्शन भी is not too stringent, too significant, right? समझ रहे हो, ये devaluation तो ठीक है, लेकिन कितनी कंट्री कितनी बार साल में या over a period of time कितनी बार devaluation करती है? This is also not very happening. It does not take into account of the influence of the disequilibrium in the balance of payment. This is also fine. Certain extent, मुझे जो लग रहा है कि it does not allow for tariff, it can be the answer and C can be the answer. Both C and D can be the answer. However, this is basically based on the commission, what they come up with the right answer. So as of this, I can say C and D both are correct, but let's see what the commission comes up with, and उनके point of view में ये debate कौन सा वाला ज्यादा important है. But as of now, the most important में मैं यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन C and D में से कोई एक option होना चाहिए.
Let's depend upon them what they consider. ओके, आर्बिट्रेज रेफर्स टू इन द टर्म्स, जैसे यहां पे देखिए मैंने क्यों बोला आपको सी एंड डी वहां पे हो सकता है, बिकॉज एज इट इज मेंशन्ड हियर कि इन विच कॉन्टेक्स्ट दे आर आस्किंग यू. सो आर्बिट्रेज इन रेफरेंस टू द इंटरनेशनल पेमेंट. ऊपर वाले क्वेश्चन में इट इज नॉट मेंशन कि पीपीपी किस एस्पेक्ट में आप बात करो, व्हाट इज दैट व्यू पॉइंट, वो व्यू पॉइंट नहीं बोला हुआ. सो इसलिए आई हैव गिवन यू दैट बोथ सी एंड डी कैन बी द आंसर. हालांकि इसमें और भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ द कमीशन कैन गिव एनी ऑफ दीज आंसर, ए बी सी डी में से कोई भी एक आंसर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए दे दे. Arbitrage refers to, in the terms of international payment, the settlement of the dispute between the central bank on matter of the international payments. Balance, buying and selling of the rupee in the international of the overseas items, movement of fund to take advantage of differences in the exchange rate, profit नहीं. अब देखो कैसे घुमाया है इन्होंने. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे वो वीडिंग आउट प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि जिसको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है और जिसको बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन से वो सेग्रीगेट हो जाएगा. बिकॉज आर्बिट्रेज का सभी को मतलब पता है कि इट्स बाइंग एंड सेलिंग, कुछ ना कुछ तो है, राइट. सो अगर वो बाइंग एंड सेलिंग देखेंगे तो ये आंसर वो करेंगे बी. और दूसरा जिसको एक्चुअली डेप्थ में पता है तो ही और शी विल गो फॉर सी. नाउ why the answer C is correct, why B is not correct, इसके ऊपर एक आंसर मैं आपको देता हूं. बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रुपीज लिखा है, इट इज आर्बिट्रेज इज इन जनरल टर्म. So it is the buying and selling of the foreign currency. It is not rupee. So that is why B option holds incorrect and C option becomes in improvement. This is the higher version of it, because जहां पे भी बेसिकली एक्सचेंज रेट कम होगा वहां पे लोग खरीदेंगे और जहां पे ज्यादा होगा वहां पे बेचेंगे. That is what the example in the notes I've given you example with the help of New York Stock Exchange and Delhi Stock Exchange. So ये वाला जो केस है, this is the movement of funds to take advantage of the differences in the exchange rate. So this should be the C option that is correct here. So option C that is correct in this case. Okay, a favorable balance of trade means, favorable balance of trade means an excess of the merchandise export and other current. Other current क्यों आ रहा है? Why other current is there? Because it is balance of trade, right? Balance of trade basically in the merchandise only. So it is incorrect. An excess of total credits, a situation in which the total inputs exceed, बिल्कुल नहीं. An excess यही बचा है. An excess of the, यही है आंसर. Because it is a merchandise. Balance of trade basically implies the trade in the goods and services, export and import. Nothing else. कोई और services वगैरह नहीं आएगा इसके अंदर. Invisible नहीं आएगा. Okay. Then you have the free trade, custom union, common market, economic union. So free trade should be going with no restriction on trade. Trade is free, no custom duty, but uniform. This is free trade. Custom union basically trade is free and no custom duty. Common market, no restriction. It is one. Then you have the common union. It should be no restriction on trade and factor movement. Custom union. This should be one, right? नहीं, एक सेकंड में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं. Just give me a second. Okay. This should be trade is free and no custom duty. This is 1 and this is 4. So it goes like this: 3, 2, 1, 4. So 3, 2, 1, 4. B should be correct. Right. Let me see at the chat box. Okay. 3, 2, 1, 4. That is correct. Okay. Let's move to the next question. अच्छा, ये क्वेश्चन शायद सेम आ गया. 27, राइट? तो 27 I've done. ओके, लगता है कि दूसरी बार स्टूडेंट ने भेज दिया होगा. एनीवे, नो इश्यूज. ओके, स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा, स्टेशनरी टाइम सीरीज, यूनिट रूट टेस्ट, नॉन स्टेशनरी को इंटीग्रेशन. ठीक है. रैंडम वॉक मॉडल. ओके, ए टेस्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी, मेथड ऑफ करेक्टिंग नॉन स्टेशनरी, करेक्टिंग मीन वेरिएंस, तो ये स्टेशनरी टाइम सीरीज में चला जाएगा. Then you have non-stationary time series. This is 1 and co-integration is this. So it should be going for 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. A should be correct. Okay. Next, you have blue. Blue
homoscedasticity, autocorrelation, multicollinearity. One of the assumption of the classical linear regression model. So one of the ये जाएगा होमो है, हेक्ट्रो नहीं है, होमो. और ऑटोकोरिलेशन है, नो ऑटोकोरिलेशन. एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मल्टीकुलरिटी है, नो परफेक्ट मल्टीकुलरिटी. सो यही चलेगा. ठीक है, बी इज वन. Disturbance terms are correlated autocorrelation properties of this, and multicularity was introduced by Ragnar Fresh. So it is 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. B should be correct. Okay. Then you have range squared or coefficient of the variance. Okay, ठीक है. Square of standard deviation, difference between largest and smallest observation, relative measure of dispersion. Difference between third quartile and this is going for this. So it should be 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Option C. ओके. इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, कंपनसेशन, कॉजाइरेंट, ये ठीक है. सो इम्पॉसिबिलिटी चला गया एरो के साथ, कंपनसेशन निकोलस कैल्डर, एंड कॉजाइरेंट चला गया मार्शल. दिस इज दिस. सो इट शुड बी 3, कंपनसेशन कहा गया 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. ठीक है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. दिस इज बी. ओके. देन यू हैव, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है. Excess of inputs, excess of input, excess of inputs. Okay. VMP over MRP, VMP over MRP, this part. Okay, ठीक है. So this is basically what? Monopolistic exploitation. This is 2. Okay. Excess of MRP over the price of input. This is basically क्या क्या है? Monopolistic exploitation होगा. ये रहा. Monopolist exploitation. This is 4. Situation where there are many firms hiring differentiated input. It is many firm. Many firm का मतलब है monopolistic competition. Situation where there are few firms hiring homogeneous oligopoly. So this is coming out to be 1 and 3. So 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3. See, डिड यू चेक इट आउट? क्योंकि मैंने क्या किया, मैं बोलता रहा उस चीज को 2413 2413, और इन्होंने मुझे गलत जगह पे नहीं डाला. मैं बोलता रहा 2413. जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस समझ लिया, मैं बहुत बार इसको यूज करता हूं, चाहे ये पेपर में हो, पीडीएफ के रूप में हो, चाहे ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो एज अ पेपर हार्ड कॉपी, या चाहे ये आपके यूजीसी एनटीए की स्क्रीन में हो. तो अगर स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम होती है तो स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम मैं इस तरह सॉल्व करता हूं. मैं ऊपर के ऑप्शन को बोलता रहा 2413, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट सही किया 2413. हमेशा याद रखना कि जो एग्जामिनर है ना, वो ऑप्शन को छुपा के रखेगा. तो ये छुपा के रखा उसने. उसने पहला स्टेप फॉलो किया कि भाई बच्चा गिर जाए, और वही चीज आपको स्ट्रांग रहना है. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट कंडीशन दैट लीव only a single firm supplying the entire market. Cost condition basically, okay, this is natural monopoly. Sale of a commodity at a lower price abroad, dumping. Constant called long run, charging different prices for different quantity, price discrimination. So ये हो गया 4, then it is 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2. A. Okay. Market for lemon, George Eccleoff. Singling, Spence, Michael Spence. Transaction cost, Williamson. Tragedy of common, this is Garrett Hardin. So ये चला गया 2, 3, 4, 1. सही किया? 2, 3, 4, 1. ठीक है. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Option B should be correct. Okay. Calder Hicks, double criteria, Samuelson. Okay. ठीक है. Arrow impossible, compensation. Samuelson is basically social welfare. Skittles with double criteria. So it is 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. A. Okay. Economics of, sorry, just give me a second. Okay. Economics of imperfect competition. This is John Robinson. The theory of monopolistic competition. Theory of monopolistic, Chamberlain. Demand under oligopoly condition. It is Paul Suzy. Duopoly solution, Augustine Cournot Augustine. So it should be 3,
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 दिस इज डी। ओके। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन। ओके, इंफीरियर गुड, ठीक है, देखते हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा। इंक्रीज इन द क्वांटिटी परचेज, मैंने ये ऑप्शन पढ़ लेता हूं। इंक्रीज इन द क्वांटिटी परचेज ऑफ अ गुड रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम द इंक्रीज इन द रियल इनकम। रियल इनकम बढ़ रहा है तो इट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट है क्वेश्चन में, यस, दिस इज वन। A good which a consumer purchase, this is good, right? So it is good which a consumer purchase less with increase in income। जैसे income बढ़ा, so purchase is less, right? Purchase is less, तो less का मतलब inferior good। Okay, increase in the quantity demand of a good due to relative price change, substitution effect। Normal good, a good which a person purchase with more in the increase, this is 4, so this goes second, 4 1 3, second 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, this is B, right? Okay, अरे बाप रे, how to do this question? Okay, Leontief production function Cobb Douglas linear, okay ठीक है, continuous ये है आपका linear, this is one। Leontief production function, Leontief basically ऐसा रहता है L shape, it is perfect, no possibility of substitution। Cobb Douglas is elasticity of substitution is 1 and the convex is perfect, कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे, just give me a second, कुछ गड़बड़ किया, एक सेकंड रुको। ओके, Leontief प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि यहाँ पे नो पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, दिस शुड बी 4। Cobb Douglas it is 3, that is elasticity of substitution is unity। Linear isoquant is continuous, this is 1। Convex is perfect substitution, कैसे हो सकता है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? ओके, दिस इज 1 एंड दिस शुड बी 2। So Leontief production function it is like this, ठीक है। Cobb Douglas production function elasticity is equal to 1। Convex isoquant continuous, this is 1। Linear का मतलब है it is like this where we have the perfect substitution, so it is 2। So yes, this is linear 4, Cobb Douglas 3, linear is this isoquant it is a no possibility, नहीं, ये वाला कौन सा क्या 2, ठीक है, ये ठीक है। So it is 4 3 2 1 A। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इट इज गिवन y इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 3x2 स्क्वायर। ओके, क्या चाहिए इनको, dy dx, dy बाय dx1 इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2, सो dy dx1 गोज फॉर 3, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद डी स्क्वायर वाई एक्स वन स्क्वायर इट गोज फॉर, इसको दोबारा करेंगे तो 4 आएगा, सो इट इज 4। ओके, नाउ डी वाई डी एक्स टू एज्यूमिंग एक्स वन कॉन्स्टेंट, सो इट इज, ये 0 चला गया, ये हैगा x1 प्लस 6x2, x1 प्लस 6x2, दिस शुड बी दिस एंड इसको दोबारा करेंगे, so with respect to this the x आएगा 6, right? So it should be 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, A should be correct। okay, क्या है, given the Cobb Douglas production function alpha plus beta match the following, so alpha plus beta is equal to 1, this is constant random scale, elasticity of substitution is basically 1, लेबर के ऊपर क्या है बीटा, तो ये हो गया बीटा, ये हो गया कैपिटल के ऊपर अल्फा, so it is 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ओके, इंटीग्रेशन ये ठीक है, नाइदर, ये तो इसके साथ चला गया, मैक्स एक्सट्रीम मिनिमा ग्लोबल मिनिमा रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड दिस इज दिस, सो इसका जाएगा इंटीग्रेशन का जाएगा 3 dx, ये जाएगा 4, ग्लोबल मिनिमा सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज 1, so 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 D। ओके, जोडारो ये क्या है? Okay. Schools basically transform in traditional agriculture, Garrett Hardin it is tragedy of common, Mehboob ul Haq
It is the poverty curtain, the choice of the third variable. It is Todaro, rural urban migration, Todaro. So it is 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1. B, AP learner, degree of monopoly, Rachel Canson. ओके, यहां मैं फंस गया अब. हैरल्ड इज केन्स एंड इकोनॉमिक डेवलप, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ किया गड़बड़ किया गड़बड़ किया. ऊपर देख, दिस इज टूवर्ड्स दिस डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड दिस इज 2. ओके ओके, रेचल कैंसल, इसका साइलेंट स्प्रिंग होगा, इसका नहीं, साइलेंट स्प्रिंग, इसका साइलेंट स्प्रिंग था. थर्ड वॉल, इट इज द केन्स एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो किताब भी है इसकी, राइट, एक्चुअली वही है. सो इट इज 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यही है ना. हाँ, ए. ओके, 47 48. PQLI, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर, जिनी, जिनी तो 1912 चला गया, जिनी कोराडो. ओके, फिजिकल लाइफ, इट इज मॉरिस डी मॉरिस. ह्यूमन डेवलपमेंट 1995 एंड जेंडर एम्पावरमेंट इज दिस. अब यहां कंफ्यूजन हो सकता है. देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज आल्सो यूएनडीपी, कोई दिक्कत नहीं. जेंडर एम्पावरमेंट मेजर इज बेसिकली, ये भी यूएनडीपी है, 1995 भी है, लेकिन जेंडर एम्पावरमेंट जो है वो 1995 के साथ जा सकता है. ह्यूमन इज विल गोइंग फॉर दिस. यूएनडीपी जो है वो दोनों निकालती है, जेंडर भी निकालती है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी निकालती है. सो अगर इसका मैच किया तो 1995 किसके साथ जाएगा? जेंडर एम्पावरमेंट मेजर के साथ ही 1995 जाएगा. सो इट शुड बी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 2 1, 2 1 मतलब व्हाट इज 2? सी, जेंडर एम्पावरमेंट, नहीं नहीं, ये बिल्कुल बकवास है. इट शुड बी ए, दैट इज करेक्ट. ओके, रागने नक्स. ओके, ये किसके साथ है? ओके, रागने नस्क, बेसिकली थ्योरी ऑफ बैलेंस, रोजेंटन रोडान, बिग पुश थ्योरी, ग्रुनर मेडाल, बैकवॉश, पॉल स्ट्रिंटन, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ. ओके, सो क्या क्या गया यहाँ पे? इट इज 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4. B should be correct. 2 3 1 4. Yes. Okay. क्या बात है. Urban resident. Just a minute. Yes. Urban residents are less migratory than the rural. यहाँ पे कहीं रेबिनस्टीन का नाम है. LFR model, Michael Todaro. This is this Rebenstein. For migration counter Albert Lee. Prospects of the higher income promote migration to the cities. Michael Todaro. 1. So it should be 3 4 2 1. 3 4 2 1. 3 4 2 1. B. Okay. Central Bank, Reserve Bank of India, Currency Authority. It is basically the bank of issue. Credit creation, commercial banks, rupee note given by Ministry of Finance. So Central Bank चला गया 3 4 1 2. 3 4 1 2. 3 4 1 2. Option D. Okay. Global public good, peace. Local public good, street light. Demerit good, cigarettes. Quasi public good, internet. इंटरनेट वाला एग्जांपल तो मैंने आपको दे रखा है. दिल्ली एयरपोर्ट सुबह के 3 बजे 5 बजे, वो वाला. ग्लोबल मतलब जो सबके लिए है, राइट. सो इट शुड बी 2 3 4 1. 2 3 4 1. 2 3 4 1. ऑप्शन बी. ओके. पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, टॉबिन, इन्वेंट्री. नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं यहाँ पे, हमेशा इसमें गड़बड़ करता हूं मैं.
पोर्टफोलियो इन्वेंट्री इज बेसिकली बॉमोल टॉबिन, पोर्टफोलियो इज टॉबिन, ठीक है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1 एंड रैंडम वॉक इज 2। सो रैंडम वॉक गया 2, रिलेटिव इनकम गया 1, इन्वेंट्री गया 4 एंड दिस गोज 3। सो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। पोर्टफोलियो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन, तो वो पंजर वाला केस है, तो दिस इज बेसिकली टॉबिन। बॉमोल बॉमोल का केस था स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। सो दिस इज फाइन। सो 3 4 1 2। ओके, commodity market equilibrium, IS curve, money market LM curve, Keynesian range, this part, lower end of LM curve, classical upper part of this. So it should be 2 1 4 3, 2 1 4 3, option B. Okay, Kisan Credit Card 1998 under the Prime Minister Shiva Atal Bihari Vajpayee production linked program. This is basically 2021 PLI Gati Shakti plan का है। Ayushman Bharat, this is 2018, right? And Fiscal Responsibility Budget Management Act 2004. So this is coming out to be second 1 4 3, 2 1 4 3 C। कैसा लग रहा अभी तक? How's it going? Karishma, you refer to the notes of the demography, the entire thing will be clear. The migration theories, please refer to the notes demography, I think lecture number 13 or 14. Entire demographic theories have been there. When I start this lecture, notes का lecture जब मैं start करता हूँ paid batch में, I always say that I have to take the help of books that are not from the mainstream economics, particularly for the anthropology, sociology, डेमोग्राफी, डायस्पोरा केस में भी मुझे ये पढ़ना पड़ा है। तो दीज आर ऑल द थ्योरीज। if you ask me to explain them in one line, it is very difficult. The same question of the Rabinstein and Albert Lee, ये दोनों क्वेश्चन जो है वेस्ट बंगाल सेट में भी आए थे रिसेंटली, जो 2023 में हुआ था, 9th of January समथिंग या 13th of January में जो हुआ था, उसमें भी ये पेपर में आया था रेबिनस्टीन का। एडवर्ड ली का भी यूजीसी नेट में आ चुका है। सो रेफर टू द दोस पॉइंट। यस, मैचिंग ही ज्यादातर है, इसके आगे भी है। सो आई विल बी नाउ पुटिंग एन एंड टू दिस एज ऑफ नाउ। सर मैच में फॉलोइंग में बहुत दिक्कत हो जाती है, मैच द फॉलोइंग में दिक्कत होती है। ये अभी टफ आगे आएगा आई थिंक, तो हाँ ये अभी आगे टफ आएगा आई थिंक, जैसे आगे जाएंगे। सो एंटायर थिंग आई विल होल्ड इट हियर इटसेल्फ, विल डू द नेक्स्ट all the next questions from here, we'll do question number 56 to 100 tomorrow on Byju's exam prep app at 9 p.m. Join me tomorrow on Byju's exam prep. The link will be shared on the Telegram channel. जिसको सभी को पता है मेरा Telegram channel कहाँ पे है, उसमें कल ये लिंक भेजूंगा। 56 to 100 questions we can solve it, right? And we'll move because इसके आगे true true false false, remember जो सेम केस मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं true true false false, तकरीबन 25 क्वेश्चन ऐसे हैं, right? We'll do that tomorrow at 9 p.m. right? I will share the PDF of this PDF tomorrow after the class, right? So let me do all these questions. So this is till okay, कहां तक है ये? 80 तक है I think so. Yes, till question number 80, till question number 80 it is there. उसके बाद 81 से लेके 100 is assertion reasoning. So कल brainstorming करने वाले हैं ऐप पे, बायजूस एग्जाम प्रैप पे, from 9 p.m. we'll discuss the remaining questions। और जो महाराष्ट्र सेट के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लीज रेफर टू दीज क्वेश्चंस, दीज आर वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। मैंने तकरीबन 35 मिनट्स पे आई हैव डन 55 क्वेश्चन, तो यू शुड बी हैविंग द सेम स्पीड, मेरे से भी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे आई मीन देयर आर मेनी थिंग्स दैट इज नॉर्मली हम ऐसा पेपर सॉल्व नहीं करते हैं कंप्यूटर के सामने, देन यू हैव टू सॉल्व, यू डोंट हैव द A4 शीट, आप इसको नहीं कर पाएंगे, सारा कुछ मुझे यहाँ पे डिजिटली लिखना पड़ता है। सो आई थिंक यू कैन scale up to the speed by 5 less minutes than me, वो सही रहेगा because speed is more important here।
विल मीट टुमारो एट बाइजूस एग्जाम प्रेप। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी अभी 56 क्वेश्चन तक रहते हैं, जितने हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए जिन लोगों ने पेपर देने गए थे। वन मोर थिंग, इफ यू गाइज दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जामिनेशन टुडे, इफ यू कैन पिंग मी द कॉमर्स पेपर, या जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे इस मोमेंट पे, अगर आप मुझे किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्लेट का कॉमर्स का पेपर, आई विल बी रियली थैंकफुल फॉर यू। एंड वो पेपर भी हम प्रीवियसली सॉल्व कर सकते हैं। सो टुमारो कैच मी लाइव एट बीईपी बाइजूस एग्जाम प्रेप 9 PM। टिल देन गुड नाइट एंड स्टे लर्निंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय।